We are coming to the next topic. Disorders of immune system. Disorders of immune system. The immune system disorder. Immune system related disorder के अंदर हम लोग first आएंगे allergy. First we are coming to allergy. It is actually the hypersensitivity of some foreign agent called as allergen. The hypersensitivity of body or some foreign agent which is called as allergen. जैसे कि एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं that is some chemicals, some drugs, animal dander, that is seafood, that is fungus, that is some vegetables or fruits, fabric, scent, etc. ऐसे बहुत सारा चीज होता है जिसके अगेंस्ट में बॉडी में कुछ हाइपर सेंसिटिविटी होता है. हाइपर सेंसिटिविटी मीन्स द सेंसिटिविटी ऑफ बॉडी विच इज वेरी हाई, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है. उसी को हम लोग बोलते हैं एलर्जेंस एंड द डिजीज और द रिलेटेड प्रॉब्लम इज कॉल्ड एन एलर्जी. तो हम लोग देखे हैं किसी को सी फूड से एलर्जी है, किसी को किसी वेजिटेबल से एलर्जी है, किसी को किसी परफ्यूम से एलर्जी है. तो ये वैरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. इट इज नॉट फिक्स दैट कि सबके केस में सेम ही टाइप का एलर्जी होगा. इट इज एक्चुअली वेरिएबल. एंड व्हाट आर द consequences or series of event takes place in the allergic reaction? एलर्जिक रिएक्शन में स्टेप्स क्या होगा मैं बता. IgE more produced. हम लोग पढ़े थे प्रीवियस क्लास में कि IgE mediate the allergic response and that will bind the histamine secreting cell. And histamine secreting cell basophil and mast cell. So that response to this, mostly histamine along with serotonin released. And ये histamine mostly क्या करेगा? That will act as vasodilation of peripheral blood vessels. Peripheral blood vessel मतलब the blood vessel which is present in the peripheral part of the body, site में जो होता है. So peripheral part of the body में जो blood vessels है, वहाँ पे vasodilation होगा. And that vasodilation ultimately gives rise to increasing the size of
कैपिलरी पोर्स, कैपिलरी पोर का साइज अगर इंक्रीज करेगा तो फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड लीक आउट। हम लोग पढ़े थे ब्लड में लिक्विड पार्ट होता है, सॉलिड पार्ट होता है। लिक्विड पार्ट इज कॉल्ड एज प्लाज्मा, राइट। तो यहाँ पे जो फ्लूइड पार्ट और लिक्विड पार्ट है विथ लेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन, रिमेंबर पूरा का पूरा प्लाज्मा लीक आउट नहीं होता है, प्लाज्मा में प्रोटीन भी होता है। तो लेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन, मोर अमाउंट ऑफ फ्लूइड विल कम आउट, ठीक है। तो ये जो फ्लूइड है वो अल्टीमेटली बाहर आएगा, कहां पे आएगा, इंटरस्टिशियल स्पेस में। एंड इंटरस्टिशियल प्लेस पे जो फ्लूइड डिपॉजिट होगा उसको क्या बोलेंगे ना, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। एंड दैट इंटरस्टिशियल फ्लूइड सर्कुलेशन चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि दैट इंटरस्टिशियल फ्लूइड विल बी कलेक्टेड इनटू द लिम्फेटिक, योर दैट इज व्हाट ना, योर दैट इज वेसल्स। आपको याद होगा जैसे ब्लड कैपिलरी था वैसे ही लिम्फ कैपिलरी है, तो लिम्फ कैपिलरी में ये जाके डिपॉजिट हो जाएगा, देन इट इज कॉल्ड एज लिम्फ। याद आया? And that is the reason why interstitial fluid and lymph chemically in the respect of composition they are similar. And as I told you कि during the leakage less amount of protein leak होता है, more fluid leak out होता है, तो इसीलिए interstitial fluid and lymph contains less clotting protein। तो लेस क्लटिंग प्रोटीन होगा तो फास्टर क्लट होगा कि स्लो क्लट होगा, इसीलिए लिम्फ बहुत ही स्लो क्लट होगा, उसका कारण ये। तो नाउ द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड लीक आउट, मैं यहाँ पे डिटेल्स नहीं जा रहा हूँ, उसमें हम पढ़ चुके हैं, मैं कल रिमाइंड कर दिया। सो फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड लीक आउट, उसके वजह से क्या होगा ना, ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर डिक्रीजेस। ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर अगर डिक्रीज किया ड्रास्टिकली, अगर ये सीवियर एलर्जिक रिएक्शन होगा, सो मे लीड्स टू डेथ, may leads to death if the allergic reaction is very severe, then may leads to death, क्योंकि ब्लड का वॉल्यूम बहुत ही कम हो जाएगा, ब्लड का प्रेशर कम हो जाएगा, उसके वजह से डेथ हो सकता है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द ट्रीटमेंट? मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था सिम्टम को बेस करके हम लोग ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो ये प्रॉब्लम क्या है, द प्रॉब्लम है ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, तो दैट इज द रिजल्ट ऑफ मे बी द वेरी अनकंफर्टेबल सिचुएशन इन द बॉडी में लीड्स टू डेथ। तो व्हाट शुड बी द ट्रीटमेंट? ऐसा कुछ ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे जिससे यस ब्लड का प्रेशर इंक्रीज करे, है कि नहीं? ऐसा कुछ करे जिससे हिस्टामिन का क्वांटिटी डिक्रीज करे। हो गया, सॉल्यूशन मिल गया। तो ट्रीटमेंट में क्या आ जाएगा ना, एंटी हिस्टामिन, और क्या होगा ना, कॉर्टिसोल। तो कॉर्टिसोल स्टेरॉइड हार्मोन था ना जो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता था। एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन selectively called as what, catecholamine, or epinephrine plus norepinephrine and steroid. So these are the treatment for the allergic reaction. कभी भी एलर्जी होगा, इनमें से कोई भी अगर हम ले लेते हैं, स्पेशली कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीहिस्टामिन along with either of these three, क्योंकि हम लोगों को कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन और एड्रेनालिन एंड स्टेरॉइड इन तीनों का कॉमन फंक्शन है, एंड दैट इज व्हाट ना इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर। Simultaneously we have to take what antihistamine, जहां से शुरुआत हुआ था, जहां से स्टार्ट हुआ था प्रोसेस प्रॉब्लम, ठीक है। तो नाउ कम्स टू द एग्जांपल्स, कंप्लीट हो गया सबका। We are coming to the example of the allergic reaction, जैसे कि फर्स्ट आते हैं अस्थमा।
अस्थमा एक्चुअली एलर्जिक रिएक्शन है विद रिलेटेड टू सेवरल फैक्टर्स, मतलब डस्ट पार्टिकल भी हो सकता है, पॉलन ग्रेन भी हो सकता है, हाई टेम्परेचर भी हो सकता है, लो टेम्परेचर भी हो सकता है। तो एलर्जी आप जो लिखे है ना, उस एलर्जी में और एक चीज एलर्जेन के लिस्ट में और एक जोड़ दो, डस्ट पार्टिकल, पॉलन ग्रेन, जो एलर्जेन का लिस्ट आप लोग लिखे थे ना, उसमें ये भी जोड़ दो एलर्जेन के लिस्ट में। डस्ट, पॉलन ग्रेन, हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर, ये भी हो सकता है एज ए एलर्जिक रिएक्शन, मतलब एलर्जन का सोर्स ये भी हो सकता है। तो अस्थमा में ये सब हो जाएगा एलर्जन। इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियल्स, मतलब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अपर ना ब्रोंकाई हो गया, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब आ जाएगा आपका कौन सा ना, एल्वियोलर डक्ट, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स वगैरह वगैरह आ जाएगा। So inflammation of the upper respiratory tract, that is bronchi and bronchioles, leads to deposition of mucus, bronchoconstriction। ये जो bronchoconstriction होता है, it is due to spasm of bronchial muscles। spasm हम लोग पढ़े थे, a sudden involuntary contraction of the, that is what involuntary muscles or smooth muscles is called as spasm, पढ़े थे। तो यहाँ पे किसमें spasm हो रहा है ना, bronchial muscles में spasm होगा। तो bronchial muscles क्या होगा, धीरे धीरे constricted होगा कि नहीं, and that is called as what ना, bronchoconstriction। and bronchoconstriction हुआ, mucus deposit हुआ, तो problem तो start हो जाएगा ना। and what is that, दो problem होगा, एक तो wheezing and दूसरा है breathing difficult। समझ में आया? that means difficult breathing and wheezing। तो यहाँ पे ये जो wheezing word है, ये बहुत ही typical word है related to the asthma। next we are coming to hay fever। hay fever is also a type of allergic reaction। it is due to dust allergy, dust की वजह से होता है mostly, pollen grain की वजह से भी होता है, mostly it is due to dust। और आप लोग देखेंगे, मैं previous class में आपको समझाया था, when somebody is migrating from one the city to the villages or village to city, तो उसमें क्या होता है ना, a series of event takes place, like what ना, reddened eye, swollen and watery eye, running nose, याद आया? next number 3, anaphylactic shock। anaphylactic shock, it is due to penicillin antibiotic। ना, एलर्जी का ट्रीटमेंट क्या होगा, मैंने तो ऑलरेडी लिखा दिया, कोई एलर्जी का एक ही ट्रीटमेंट है, इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, इसीलिए अस्थमा का कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। यू जस्ट हैव टू कीप डिस्टेंस फ्रॉम योर एलर्जेंस।
खुद को बचाना पड़ेगा, खुद को प्रिवेंटिव लेना पड़ेगा, उसका कोई परफेक्ट एंड फुल प्रूफ ट्रीटमेंट तो अवेलेबल है ही नहीं। इसीलिए हम लोग जो इनहेलर यूज करते हैं, वो जो इनहेलर यूज करते हैं फॉर द अस्थमाटिक पेशेंट, उसमें होता क्या है, ब्रोंकोडायलेटर, उसमें जो केमिकल्स होता है वो ब्रोंकाई को डायलेट करता है ताकि हम लोग ब्रीदिंग परफेक्टली ले सके। वही है सोल्यूशन और क्या। The anaphylactic shock, it is due to penicillin antibiotic. Penicillin is a very strong antibiotic, you know, that is extracted from the mold called as Penicillium notatum. पढ़े आप लोग? तो हम लोग ऑलरेडी लिखे हैं fungi और fungus is also act as what ना? That is allergen. That is the reason why penicillin is a very important, that is strong antibiotic, but it is not affordable for everyone. इसीलिए पेनिसिलिन इंजेक्शन किसी को देने से पहले ये एक छोटा सा पहले टेस्ट किया जाता है, whether the body is sensitive or resistant to penicillin. अगर सेंसिटिव होगा तो डेथ हो सकता है पेशेंट का। अगर हम बिना टेस्ट किए अगर पेनिसिलिन इंजेक्शन किसी पेशेंट के बॉडी में इंजेक्ट कर देंगे तो तुरंत उसका डेथ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने डेथ देखा है बिकॉज ऑफ व्हाट ना, वेरी लो प्रेशर, ड्रास्टिकली डिक्रीज इन द प्रेशर गिव्स राइज टू डेथ। एंड पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, इट इज डिस्कवर्ड बाय, कौन डिस्कवर किए थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कौन डिस्कवर किए थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एंड ये जो डिस्कवरी हुआ था पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का, दैट इज एक्चुअली नॉट इंटेंशनल डिस्कवरी, इट इज बाय मिस्टेक, मतलब अनफॉर्चुनेटली हुआ था। सो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्कवरी बाय चांस। क्या बोलते हैं उसको, एंड दैट इज साइंटिफिकली, दैट टेक्निकल वर्ड is called as serendipity. क्या बोलते हैं उसको, serendipity. serendipity का मतलब है डिस्कवरी बाय चांस। कर कुछ और रहे थे, हो कुछ और हो गया, ठीक है। रिसर्च हो रहा था एक्स के ऊपर, डिस्कवर हो गया वाई, that is called as what na, discovery by chance, called as serendipity. One of the example is the Alexander Fleming discovered penicillin. Next we are going to number 4, eczema. Eczema, it is actually related to skin due to harmful chemical in water species. तो हार्मफुल केमिकल्स जो वाटर में होते हैं उसके वजह से एक्जिमा होता है, स्किन बहुत ही ज्यादा अफेक्टेड होता है। So all these are related to the allergic disease. Now we are coming to autoimmunity. एलर्जी कंप्लीट हो गया, हम लोग अभी आते हैं ऑटो इम्यूनिटी। तो ऑटो इम्यूनिटी मीन्स when antibody unable to differentiate self from non-self. So in that case, antibody also attack self or own cells. ठीक है ना? Antibody will attack the self or own cells. In that case, we can say the autoimmunity will cause, and that is due to you're unable to differentiate the cell from the non-self. इसका बहुत सारा cause हो सकता है, इसका कोई perfect cause नहीं है, इसीलिए इसका कोई perfect treatment भी नहीं है। इसका cause बहुत सारा हो सकता है, जैसे कि जेनेटिक हो सकता है, ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर भी हो सकता है, मे बी
ड्यू टू म्यूटेशन हो सकता है, और ड्यू टू अननोन कॉज। कुछ भी हो सकता है, कोई फुल प्रूफ कॉज हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इट मे बी जेनेटिक, मे बी एनवायरमेंटल फैक्टर, मे बी ड्यू टू सर्टेन म्यूटेशंस और ड्यू टू अननोन कॉज। इट रिलेट्स टू व्हाट, ऑटोइम्यूनिटी। एंड आप लोग अलग अलग चैप्टर में ऑटोइम्यूनिटी का डिटेल्स पढ़े हुए हैं, सो आई होप आप लोग मुझे हेल्प करेंगे रिगार्डिंग द एग्जांपल्स ऑफ द ऑटोइम्यूनिटी। क्या होगा बोलिए? एग्जांपल्स ऑफ ऑटोइम्यूनिटी स्टार्ट करते हैं, चैप्टर वाइज स्टार्ट करिए ना, क्या दिक्कत है? चलिए हम बताते हैं, आपको हेल्प कर देते हैं। मायस्थेनिया ग्रेविस, सिर्फ और सिर्फ याद रखना है कि उसका टारगेट क्या है। मायस्थेनिया ग्रेविस में टारगेट क्या है? न एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर प्रोटीन ऑफ मसल, क्या है? नेक्स्ट, autoimmune thyroiditis is always called as Hashimoto's disease. Hashimoto disease में एंटीबॉडी किसको टारगेट करता है? ना टारगेट द थायराइड ग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट, ग्रेव्स डिजीज, जिसको हम लोग एक्सोथर्मिक ऑर्डर बोलते थे। यहाँ पे एंटीबॉडी मिमिक, याद आया? द एक्शन ऑफ TSH so that the more secretion of thyroxine hormone occurs. So that is the reason why Graves' disease is due to hyperthyroidism. याद आया? Next, Addison's disease. एडिसन डिजीज आप लोग पढ़े थे एंडोक्राइन चैप्टर में। एडिसन डिजीज में क्या होता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स डिस्ट्रॉय हो जाता है कि नहीं? याद है? तो एडिसन डिजीज, दैट इज द टारगेट इज व्हाट? ना एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल कॉर्टेक्स। नेक्स्ट है नंबर 4 सर नंबर 5, क्रॉनिक एनीमिया। क्रॉनिक एनीमिया में टारगेट हो जाएगा आरबीसी। नेक्स्ट 6, क्रॉनिक हेपेटाइटिस, टारगेट हो जाएगा लिवर। फटाफट लिखिए, अल्सरेटिव कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस में टारगेट है लार्ज इंटेस्टाइन, कोलन पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। नंबर 8, IDDM, याद करिए, टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस। याद आया? तो टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस, IDDM का फुल फॉर्म क्या है? इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। पढ़े थे, याद करिए हर चीज। तो here the antibody is targeting what? The beta cells of islets of Langerhans. बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, इसीलिए इंसुलिन सिंथेसिस डिक्रीज करता जाता है। नंबर 9,
rheumatoid arthritis. rheumatoid arthritis में टारगेट क्या होता है? जॉइंट. याद आया? Then number 10. That is multiple sclerosis. मल्टीपल स्क्लेरोसिस में टारगेट हो जाएगा माइलिन सिल्क. नंबर 11 विटिलिगो. विटिलिगो में टारगेट होगा मेलानोसाइट सेल्स ऑफ स्किन, जो कि मेलानिन सिंथेसिस करता है. ठीक है ना? तो विटिलिगो जिस पर्सन को विटिलिगो होता है, melanocyte cells of the skin which secreting the melanin pigment is to be affected by the antibody. इसके वजह से मेलानिन सिंथेसिस कम हो जाता है. तो मेलानिन सिंथेसिस कम होने से तो स्किन का जो कलर है वो डिस्कलर हो जाता है. ठीक है? दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? विटिलिगो. एंड द लास्ट वन इज सोरियासिस. सोरियासिस पे टारगेट होता है epidermal cells of skin. Means this vitiligo and psoriasis both are targeting the skin but different same. समझे कि नहीं? So these are the actually list of the different type of autoimmune related disorder present in your body. Now we are coming to the last or the next topic of this immunity, that is called as lymphoid organs. Start there. Coming to the next, lymphoid organs. So lymphoid organ actually it is the organs which are formation, differentiation, and proliferation of lymphocytes. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा. Formation, differentiation, and proliferation of lymphocyte occurs in the organ are called as lymphoid organ. Now lymphoid organ का दो टाइप है. एक ये प्राइमरी lymphoid organ, दूसरा है सेकेंडरी lymphoid organ. ध्यान दें. Primary lymphoid organs where the formation and maturation, जिसको हम लोग बोलते हैं differentiation, of lymphocytes. तो जहां पे फॉर्मेशन होगा एंड मैचुरेशन होगा उसको बोलेंगे प्राइमरी. एंड इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? ना दैट इज यस बोन मैरो एंड थाइमस. यस इट प्रोवाइड बहुत सिंपल एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इट प्रोवाइड मैक्रो एनवायरनमेंट की माइक्रो एनवायरनमेंट. माइक्रो एनवायरनमेंट, देखिए एनवायरनमेंट अगर ज्यादा बड़ा होगा, मैक्रो होगा, तभी जाके एंटीजन के साथ एंटीबॉडी इंटरेक्ट करेगा. ठीक है? एंड एंटीजन के साथ एंटीबॉडी इंटरेक्ट करेगा तभी जाके
बी सेल पिछले क्लास में पढ़े थे, बी सेल विल डिवाइड, टी सेल विल डिवाइड ओनली व्हेन दे विल बाइंड विद द एंटीजन। एंड एंटीजन को बाइंड करने के लिए स्पेस बड़ा चाहिए, मैक्रो एनवायरनमेंट की माइक्रो एनवायरनमेंट, मैक्रो। एंड प्राइमरी क्या प्रोवाइड कर रहा है, माइक्रो। मींस प्राइमरी इज नॉट द साइट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी। ठीक है, सो एंटीजन सेंसिटिव एंटीबॉडी, antigen sensitive antibody is to be takes place where they will bind with the antigen, and that is macro secondary। एनसीईआरटी का लाइन है, चेक कर लीजिएगा ऐसा। Now it produces is provide the micro environment to antigen antibody interaction present on एंड याद रखिए वर्सा फैब्रिकस, वर्सा फैब्रिकस हेमाटोपोएटिक ऑर्गन in case of birds। तो बर्ड्स के केस में वर्सा फैब्रिकस हेमाटोपोएटिक ऑर्गन होता है, एज इन केस ऑफ बर्ड बोन मेरो एब्सेंट। सो बोन मेरो की एब्सेंट है बर्ड्स के केस में, इसीलिए हेमाटोपोएटिक ऑर्गन वर्सा फैब्रिकस एंड दैट इज सिमिलर टू बोन मेरो। तो एंटीजन सेंसिटिव एंटीबॉडी, एंटीजन सेंसिटिव एंटीबॉडी मतलब क्या है, मैचुरेशन है थी। एंटीजन सेंसिटिव एंटीबॉडी मतलब मैचुरेशन, मतलब उसको रेडी कर दिया है। एंटीजन सेंसिटिव एंटीबॉडी ऑकर्स इन प्राइमरी और सेकेंडरी ना, प्राइमरी। एंटीजन सेंसिटिव एंटीबॉडी कहां पे होता है, प्राइमरी में। याद रखिएगा ये क्वेश्चन से मोस्ट फ्रीक्वेंटली आता रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकेंडरी में। सेकेंडरी का डेफिनेशन क्या होगा, बचा क्या है, फॉर्मेशन डिफरेंशिएशन तो हो चुका है, क्या होगा ना, प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन मतलब क्या है, डिवीजन ऑफ लिम्फोसाइट। मैंने आपको बताया था कि लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट जो डिवाइड करता है, प्रोलिफरेट करता है, दैट इज ओनली व्हेन बाइंड विद द एंटीजन। So it provide macro environment, provide macro environment, so antigen antibody interaction occurs। याद रहेगा, एग्जाम्पल बोलिए, स्प्लीन, Peyer's patches, tonsils, lymph node, formiform appendix, ठीक है। तो आप बोलेंगे वर्मिफॉर्म एपेंडिक्स तो वेस्टिजियल होता है, यस वेस्टिजियल, नो डाउट, वेस्टिजियल विथ रिस्पेक्ट टू डाइजेशन, बट इसका सेकेंडरी रोल है विद द सेकेंडरी व्हाट ना, लिम्फोइड ऑर्गन्स। इसीलिए वर्मिफॉर्म एपेंडिक्स को, क्योंकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम का ही पार्ट है एंड डाइजेशन में इसका कोई रोल नहीं है, इसलिए आप उसको वेस्टिजियल बोलेंगे, बट वेरी लिमिटेड रोल
in the lymphoid organs. And spleen का रोल क्या है? Graveyard of Argus. And second क्या है? The blood bank of body. And spleen is only supplied with oxyblood. तो ये कभी कभी क्वेश्चन रह जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा. Spleen is supplied with oxygenated blood only, and the graveyard of Argus is blood bank of our body, etc. etc. So now the last point, that is what the MALT. And और एक ये GALT, GALT, malt, mucosal associated lymphoid tissue. बुक्स या तो आपके पास जो एनसीईआरटी है उसमें चेक करिए क्या लिखा है. मीन माल्ट फॉर्म द 50% ऑफ द बॉडी, दैट इज lymphoid tissue, or more than 50% or less than 50%. चेक करिए. About 50%. देखिए इसको बोलते हैं क्वेश्चन. लिखा है about 50%, मतलब ना मोर देन है ना लेस देन है, ऑलमोस्ट अबाउट. Mucosal associated lymphoid tissue, it forms about 50% of lymphoid tissue. And GALT क्या है? देखिए माल्ट कहाँ प्रेजेंट है वो भी देखना पड़ेगा कि माल्ट कहाँ प्रेजेंट है. जहां म्यूकस है वहां माल्ट है, जैसे कि जीआई ट्रैक्ट, जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जैसे कि यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट. अरे समझे कि नहीं? लेकिन गैल्ट का फुल फॉर्म क्या है? द गट एसोसिएटेड lymphoid tissue. तो गट एसोसिएटेड lymphoid tissue मतलब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन आएगा? जीआई ट्रैक्ट आएगा कि नहीं? ऑल माल्ट आर गैल्ट और ऑल गैल्ट आर माल्ट. हाँ, ऑल गैल्ट आर माल्ट बट ऑल माल्ट आर नॉट गैल्ट. ठीक है, तो lymphoid टिश्यू खत्म हो गया. अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, एड्स. Acquired immunodeficiency syndrome. पॉजिटिव पैथोजन का नाम क्या है? HIV, that is human immunodeficiency virus. And HIV एक तो ये रेट्रोवायरस है, दूसरा ये लेंटी वायरस. रेट्रोवायरस with reverse transcriptase enzyme. And they will go for the reverse transcription from RNA into DNA, right? But what about the lentivirus? The lentivirus with long window period. Long window period. Window period means symptomless.
जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, इंक्यूबेशन पीरियड। पढ़े हैं? तो यहाँ पे इंक्यूबेशन पीरियड और विंडो पीरियड और सिम्टमलेस कितना है ना, 5 to 10 years। तो पैथोजन एंट्री तो कर जाता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 5 to 10 years लगता है सिम्टम अपीयर होने में। That is why they have the very long window period or symptomless period, so called as lentivirus. ठीक है? Now, first discovered in the world, the first report जो हुआ था केस 1981 in USA। इंडिया में ये रिपोर्ट हुआ था 1986 में इन चेन्नई। तो क्वेश्चन है कि एड्स इज ए कंजेनिटल की नॉन कंजेनिटल डिजीज? अरे एड्स क्या है, कंजेनिटल है कि नॉन कंजेनिटल है? क्या ये सेंस फ्रॉम बर्थ प्रेजेंट होता है कि आफ्टर द बर्थ विद इन लाइफ टाइम होता है? इसीलिए तो नाम है एक्वायर्ड। व्हाई इट इज कॉल्ड एज एक्वायर्ड? बिकॉज़ इट इज प्रेजेंट और एक्वायर्ड विद इन द लाइफ टाइम फ्रॉम आवर सराउंडिंग। ठीक है? नाउ इसीलिए एड्स को हमेशा याद रखना, इट इज ए नॉन कंजेनिटल डिजीज। कभी कभी ये कंजेनिटल हो जाता है इफ द मदर इज इन्फेक्टेड, बट इन जनरल इट इज नॉट कंजेनिटल। समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए व्हाट इज द मोड ऑफ इन्फेक्शन and or mode of transmission and how it is being spread from person to person, more risk of chance of infection। तो पहले देखते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। नंबर 1, unprotected sexual contact। Number 2, infected needle and syringe। Number 3, contaminated blood and blood product। Number 4, from infected mother to fetus। From infected mother to fetus। This is the 4 different way in which the AIDS virus will spread from person to person। इसीलिए हम लोग पढ़े थे एसटीडी में कि AIDS is the only type of STD which can also, along with the hepatitis also, that can spread through the blood contamination also। Plus ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, that is why they infecting the fetus from mother। तो ये प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस कर सकता है। Next, it is also being transmitted through the infected needle and syringe। Now the point is, mosquito bite करने से, हाथ मिलाने से, साथ में बैठ के खाने से, ऑफिस में, स्कूल कॉलेजेस में साथ में बैठ के पढ़ने से, काम करने से ये स्प्रेड नहीं करता है, as it is not a what ना contagious। contagious का मतलब याद है, मतलब फिजिकल कांटेक्ट। एसटीडी है तो ये फिजिकल कांटेक्ट है, ये एसटीडी है मतलब फिजिकली कांटेक्ट से स्प्रेड कर रहा है। मैं बोल रहा हूँ मतलब स्किन टच, फिजिकली स्किन टच से ये स्प्रेड नहीं करेगा, only by means of the sexual contact and blood contamination। Clear? Now what are the risks of the chances to be spread?
Risk of chance of occurring. Number one, the people who have multiple sex partners. Number two, drug addict. Number three, those who need repeated blood transfusion. जैसे कि थैलासीमिया, जो थैलासीमिया पेशेंट होते हैं उनको बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की होता है कि नहीं, so they need more fresh blood always, and that is where the chance of risk of contamination is occurring there. And the number four, if the mother is infected during pregnancy, so this is the high risk of chances of occurring. समझ में आ गया? Link is directly with what the transmission of mode of transmission is a directly link है. As it is being transmitted by means of unprotected sexual contact, so it is being more chance to be occurring in the people those are multiple sex partner. Infected needle and syringe से spread करता है, इसलिए drug addict के केस में ज्यादा chances है होने का. Contaminated blood and blood product के थ्रू होता है, इसलिए दूसरे केस में जिनके केस में ब्लड ट्रांसफ्यूजन बार बार किया जाता है उनके केस में चांस है ज्यादा होने का. And as it is from infected mother to fetus, so if the mother is being infected during the pregnancy, there is a high risk of chance of this spread. समझ में आ गया कि? Now we are coming to the structure of the AIDS HIV virus. फिर डायलिसिस के टाइम एचआईवी स्प्रेड होने का खतरा कम क्यों होता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है. डायलिसिस के टाइम में होने का चांसेस ज्यादा है. ठीक है सर. This is actually the structure of the AIDS virus HIV. Let me finish the diagram first.
Because the labeling part of this HIV, this is GP120 spike. This is GP41 pedicel. GP stands for glycoprotein. This is actually single-stranded RNA. As you can see, ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए 2 कॉपी है कि 1 कॉपी है? सिंगल स्ट्रैंडेड है तो ये आइडेंटिकल कॉपी होगा कि नॉन आइडेंटिकल कॉपी होगा? नॉन आइडेंटिकल मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री होगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड बन जाएगा। थोड़ा सा तो सोचो, थोड़ा सा तो सोचो, ये बिना सोचे सोचे आंसर दे देते हो। मैंने क्लियरली बोला कि सिंगल स्टैंडर्ड, अगर सिंगल स्टैंडर्ड है मतलब उनका मैच नहीं कर रहा है, इसीलिए तो सिंगल स्टैंडर्ड है। अगर मैच कर जाता तो डबल स्टैंडर्ड नहीं बन जाते। तो क्या होगा, आइडेंटिकल कॉपी है कि कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी है? हाँ, ये क्वेश्चन है। टू कॉपी ऑफ टू आइडेंटिकल कॉपी, and that is why these are diploid. It's not haploid, diploid set of chromosome. Single stranded RNA to identical copy. And this is reverse transcriptase. मोस्टली रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम तो है ही, बहुत ही अदर एंजाइम भी प्रेजेंट होता है, इन्वर्टेज, प्रोटीज प्रेजेंट है, बट we will discuss here only the reverse transcriptase. This is P17 and this is P24. P stands for protein. So two type of glycoprotein and two type of protein, and this is the lipid bilayer of host. आप लोग जानते हैं कि वायरस का कभी भी लिपिड बाइलेयर होगा क्या? Lipid bilayer only present in the plasma membrane of eukaryotic cells, right? And this HIV is an animal virus or a plant virus? ये ह्यूमन बीइंग को अटैक कर रहा है, मतलब ऑब्वियसली इट इज एनिमल वायरस। एंड ये एनिमल वायरस और ह्यूमन बीइंग को जब अटैक करता है तो ह्यूमन के सेल के चारों तरफ क्या है, लिपिड बाइलेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जब ये सेल से बाहर निकलता है, मल्टीप्लाई करने के बाद सेल से जब बाहर निकलता है तो सेल मेम्ब्रेन of human cell which contains the lipid bilayer will form a coat around this particular virus. समझे कि नहीं? And that is why the lipid bilayer which is present here, it is not belongs to virus. ये किसका है? होस्ट का। कंप्लीट है सबका? डायग्राम फिनिश्ड? आगे आते हैं। ये जो याद रखिएगा, ये जो GP120 एंड GP41, GP120 कहाँ पे है? स्पाइक पे है कि पेडिसिल में है? स्पाइक एक्सटर्नली है कि इंटरनली है? मतलब यही जो स्पाइक है GP120 है, this particular will be act as a recognition site to bind with the T helper cell and macrophage. याद आया कि why तो HIV? अभी क्वेश्चन है why only the macrophage and T helper cell is the target for HIV? Why only these two cells? Mostly these two cells ही होते हैं बॉडी में,
जिसको HIV अटैक करता है, बिकॉज इन दोनों सेल के पास इस CD4 को रिसीव करने के लिए, सर ये GP120 को रिसीव करने के लिए रिसेप्टर प्रोटीन प्रेजेंट है, and that receptor protein is called as CD4 receptor site. The CD4 receptor site only present in macrophage and T helper cell which bind with the GP120 of HIV. अगर हम रिसीव करने के लिए रिसेप्टर नहीं रखेंगे तो रिसीव कैसे करेंगे, बाइंड कैसे होगा? एंड इन्हीं दोनों सेल के पास इस GP120 को रिसीव करने के लिए रिसेप्टर है, बाकी सेल के पास ये CD4 रिसेप्टर नहीं है, इसीलिए बाकी सेल्स को ये HIV टारगेट नहीं करता है. And they will receive there, they will bind there, and they will multiply at the number. इसीलिए वायरस का मल्टीप्लिकेशन कहाँ पे होता है, मैक्रोफेज में, as well as in the T helper cell. But most frequently कहाँ पे होता है ना, मैक्रोफेज. That is when the macrophage act as a factory for HIV. समझे कि नहीं? फैक्ट्री हम किसको बोलते हैं, जहां पे हम अपने प्रोडक्शन को जारी रखें विदाउट डैमेज टू द फैक्ट्री. वैसे ही HIV मैक्रोफेज को बहुत ज्यादा हार्म नहीं करता है, क्योंकि मैक्रोफेज को अपना फैक्ट्री के तौर पे यूज करता है टू प्रोड्यूस द ह्यूज नंबर ऑफ HIV. समझे कि नहीं? तो किसको डिस्ट्रॉय करता है, T हेल्पर्स. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. CD4 receptor site of macrophage and T helper cell recognize and bind to GP120 of HIV. So HIV only target macrophage and T helper cell. अभी हम लोग साइकिल देखते हैं, लाइफ साइकिल. Supposed to be this is the macrophage. And this is the nucleus of macrophage. The crossword DNA. Now this is the HIV. Two single-stranded RNA identical copy. तो वो क्या रिलीज किया, होस्ट के अंदर क्या रिलीज किया ना, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA रिलीज किया प्लस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम. ठीक है. Now this single-stranded RNA which is being introduced into the host cell will produce first what, the single-stranded DNA. ये है क्वेश्चन कि after entering into the host the HIV produced first dash. क्या प्रोड्यूस करेगा, the single-stranded DNA from single-stranded RNA, and this is called as reverse transcription. So by means of the reverse transcription, the single-stranded RNA will produce the single-stranded DNA. अब ये single-stranded DNA क्या बनाएगा, double-stranded DNA. और ये double-stranded DNA, ये सारे के सारे प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर ही तो हो रहा है. मैं यहाँ पे दिखा नहीं रहा हूँ, लेकिन ये अल्टीमेटली हो क्या रहा है, कहाँ पे हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर. Now this double-stranded DNA
will produce what? The mRNA. ये किसका है? ये वायरल mRNA है कि नहीं? ये वायरल DNA है कि नहीं? Now this mRNA will produce the protein. तो ये वायरल प्रोटीन होगा. एंड हम लोग अभी पढ़े थे वायरल प्रोटीन P17, P24 पढ़े थे. And this viral protein along with the RNA, this viral protein along with the RNA that will again produce the multiplication of virus that will come soon. And जब ये बाहर निकलेगा, जब ये बाहर निकलेगा, अब आप देखिए इसके चारों तरफ ये एक लिपिड बैरियर फॉर्म होगा कि नहीं? होगा फॉर्म. So this is the multiplication of virus. This is the multiplication of the virus. So here macrophage act as factory for HIV. Complete है सबका. So HIV here act as a factory of HIV. Macrophage act as a factory of HIV. So they least harm to the macrophage. क्योंकि macrophage का नंबर वैसे भी आपके बॉडी में बिलियंस में बहुत ज्यादा है macrophage का नंबर. तो ये macrophage को अपना फैक्ट्री के तौर पे यूज करते हैं, लेकिन macrophage का नंबर बहुत ज्यादा रिड्यूस नहीं होता है. रिड्यूस होता है किसका है? टी हेल्पर सेल. क्यों? क्योंकि टी हेल्पर सेल का नंबर पहले से कम है. हम लोग पिछले क्लास में ही पढ़े थे. टी हेल्पर सेल विल ओनली प्रोड्यूस्ड व्हेन द टी सेल और टी लिम्फोसाइट विल बाइंड विद द एंटीजन. एंटीजन के साथ बाइंड करेगा तभी टी हेल्पर सेल प्रोड्यूस होगा. एंड आपके बॉडी में टी हेल्पर सेल का नंबर बहुत ही कम होगा. मैक्रोफेज के रिस्पेक्ट में इसका नंबर बहुत कम. एंड दैट इज व्हाई टी हेल्पर सेल का नंबर ड्रास्टिकली डिक्रीज कर जाता है. कंप्लीट है. सो वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट पेज. T helper cell number drastically decrease below 200 mm to the power q. NCERT का लाइन है important. So T helper cell number drastically decrease below 200 mm³ leads to opportunistic infection. अपॉर्चुनिटी का मतलब समझ रहे हैं? मैं आपको बताया था नॉर्मली ये डिजीज होता नहीं है, लेकिन आपका इम्यूनिटी अगर कम हो जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी टोल्ड यू कि टी हेल्पर सेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर बोथ ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यूनिटी एज वेल एज सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली. अगर टी हेल्पर सेल का नंबर बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस किया ना, ऑल द इम्यूनिटी विल बिकम डेफिशिएंट, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एक्वायर्ड immunodeficiency syndrome. So opportunistic infection of Mycobacterium, fungus, Toxoplasma, virus, etc.
So opportunistic infection start हो जाएगा body में. And what are the causes behind the opportunistic infection? The mycobacterium, some of the fungus, some of the parasite like your toxoplasma, some of the major quantity of virus जो आपके body में हमेशा try करते हैं घुसने के लिए, जो हमेशा try करते हैं disease form करने के लिए, because क्योंकि आपका immune system strong है, इसीलिए ये नहीं हो पाता. But as because now the immune system become less, समझे कि नहीं? इसी वजह से ये opportunistic infection start हो जाएगा. And what are the syndrome? Syndrome मैंने आपको बताया था, collection of symptom is called as what? Syndrome. तो यहाँ पे opportunistic infection का syndrome क्या है? Like your diarrhea, pneumonia, leukoplakia और candidiasis. Dementia. Dementia मतलब loss of memory. Blindness. Herpes simplex infection. And the most important, Kaposi sarcoma. Kaposi sarcoma is a cancer that is related to AIDS. ये जो Kaposi sarcoma है, ये सिर्फ AIDS infected person को होता है. ऐसे समझे कि नहीं? मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, आप लोग थोड़ा बहुत 12th क्लास में भी पढ़े होंगे कि कैंसर इज बिकॉज ऑफ व्हाट ना, ऑन्कोजिन. व्हेन द प्रोटोकोजिन चेंज इनटू ऑन्कोजिन, हम लोग 2-3 मिनट में ही पढ़ेंगे अभी. So protoncogen will be changed into oncogene, then the normal cell become cancers. And who are the source of this oncogene? ना आपके बॉडी के अंदर ये ऑन्कोजिन फॉर्म हो सकता है, या तो किसी दूसरे वायरस के थ्रू आपके बॉडी में एंट्री कर सकता है. एंड इफ दैट वायरस इज एचआईवी, बात को समझेगी नहीं? मतलब एचआईवी वायरस के थ्रू ये ऑन्कोजिन आपके बॉडी में डायरेक्टली एंट्री किया. But HIV is a retrovirus, single stranded RNA. They contains the oncogene, and वही oncogene की वजह से कैंसर होता है. And this is the Kaposi sarcoma, which is exclusively associated with the AIDS. तो ये symptoms opportunistic infection समझ में आ गया? Now we are coming to the diagnosis. Diagnosis हम लोग पढ़े, बताइए. ELISA याद है ना? Enzyme linked immunosurveillance assay. Enzyme linked immunosurveillance assay, ELISA. And PCR भी होगा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. बट मोस्ट फ्रीक्वेंटली क्या है, आपको अगर क्वेश्चन में देगा तो आंसर क्या होना चाहिए? ELISA. एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग इज द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर ELISA. याद है? Now what is the treatment? It is treated by antiretroviral drugs.
So treated by antiretroviral drugs or therapy. क्योंकि अल्टीमेटली ये वायरस क्या है? रिट्रोवायरस. तो रिट्रोवायरस के लिए हम लोग कौन सा ट्रीटमेंट यूज करेंगे ना? एंटी रिट्रोवायरल. ठीक है, एंटी रिट्रोवायरल. तो एग्जांपल है ज़िटोबुटिन, एजिडोथाइमिडिन, that is AZT, nevirapine, रिट्रोवेर, ठीक है, ज़िटोबुटिन, नेविरापिन, रिट्रोवेर, एजिडोथाइमिडिन. These are the medicines or the drops which is being used as a treatment for the AIDS patient. And remember, all are nucleoside analog. न्यूक्लियोसाइड एनालॉग मतलब क्या है? न्यूक्लियोसाइड एनालॉग्स मतलब क्या है भाई? मतलब बहुत सिंपल है, दे आर सिमिलर टू द न्यूक्लियोसाइड. न्यूक्लियोसाइड हम लोग पढ़े भाई, बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है कंसेप्ट. The HIV will enter into the macrophage. First they synthesize what na? DNA. Single stranded DNA. DNA क्या है? न्यूक्लिक एसिड है. उसको बनाना कहाँ से है ना? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है. डीएनए इज अ न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड नीड न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोटाइड मेड फ्रॉम न्यूक्लियोसाइड. अगर उसको डीएनए बनाना है, उसको क्या चाहिए? न्यूक्लियोसाइड चाहिए. कौन सा न्यूक्लियोसाइड? एडेनोसिन, गुआनोसाइन, साइटिडिन एंड थाइमिडिन. क्योंकि डीएनए है तो थाइमिडिन होगा. ठीक है, हम यहाँ पे मेडिसिन क्या यूज कर रहे हैं? न्यूक्लियोसाइड का एनालॉग, सिमिलर टू न्यूक्लियोसाइड बट नॉट न्यूक्लियोसाइड. तो ये अल्टीमेटली ब्लॉक करेगा कि नहीं डीएनए फॉर्मेशन को? So because of the using of this medicine nucleoside analog, they will block or slow down the synthesis of single stranded DNA from RNA. अरे समझे कि नहीं? तो पूरा वायरस का जो रेप्लिकेशन स्पीड है, मल्टीप्लिकेशन स्पीड है, जो रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन है वो स्लो डाउन हो जाएगा कि नहीं? अगर स्लो डाउन हो जाता है रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो इम्यून सिस्टम डेफिशिएंसी जिस स्पीड से होना चाहिए उस स्पीड से नहीं होगा, तो द पर्सन का जो विंडो पीरियड है वो और बढ़ जाएगा. समझे कि नहीं? उससे फायदा क्या होगा ना? वी कैन एनहेंस द लाइफ स्पैन ऑफ ए पेशेंट, नहीं, बट वी कैन नॉट क्योर द पेशेंट. क्योंकि हम लोग यहाँ पे एड्स वायरस को किल नहीं कर पा रहे. वी आर जस्ट स्लो डाउन द रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन. समझे कि नहीं समझे? So it is not possible to treat the AIDS patient completely as we have no foolproof medicine. We just have the medicine to slow down the rate of multiplication so that the lifespan of the patient can be enhanced, but we cannot cure the patient. I hope आपको समझ में आया. तो prevent or block the formation of single stranded DNA. So we can't kill the virus. So we can cure the patient, but
we can enhance lifespan by slow down the rate of multiplication. आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। न्यूक्लियोसाइड एनालॉग का मतलब क्या है? ठीक है, कभी कभी ये भी होता है कि रेगुलर यूज करने से, जैसे हम लोग एक ही फाइट का एंटीबायोटिक रेगुलरली यूज करते हैं तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी में धीरे धीरे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाते हैं। तो सेम टू सेम हियर द एचआईवी आल्सो गेट द रेजिस्टेंट अगेंस्ट दीस मेडिसिन्स। रेगुलरली यूज करने से ये एचआईवी जो है कुछ देर के बाद, कुछ साल के बाद, ये एचआईवी वायरस इस मेडिसिन के अगेंस्ट में रेजिस्टेंट हो जाता है, तो दिस मेडिसिन विल बी इनइफेक्टिव। फिर बार बार मेडिसिन चेंज करना पड़ता है एंड एक ऐसा टाइम आएगा जब आपका मेडिसिन बिल्कुल काम नहीं करेगा एंड द पर्सन विल डाई। तो मैंने क्या बोला? जस्ट वी कैन एनहेंस द लाइफ स्पैन ऑफ द पेशेंट। So as AIDS cannot be cured, a disease, it cannot be cured. That is why it is better to have what na educate the people, to aware the people regarding the rate of infection, regarding the that is the spread of HIV. So that is why we celebrate the World AIDS Day as a 1st December. And NACO का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम है लोगों को एजुकेट करना, अवेयर करना पीपल को, एंड ताकि एड्स को हम लोग स्प्रेड करने से प्रिवेंट कर सके। बिकॉज इट कैन नॉट बी क्योर्ड, वी कैन जस्ट कंट्रोल द डिजीज बाय मींस ऑफ अवेयरिंग द पीपल। समझ में आया या नहीं आया? समझ में आ गया? चलिए हम लोग 3-4 मिनट टाइम है, थोड़ा सा कैंसर भी आइडिया दे देते हैं, स्टार्ट करते हैं। So we are coming to the next topic, cancer. देखिए नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि सेल डिवीजन in a normal cell is highly controlled and regulated. समझे कि नहीं? नॉर्मल सेल में सेल डिवीजन का जो प्रॉपर्टी है वो हाईली कंट्रोल्ड है, रेगुलेटेड है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज व्हाट? कांटेक्ट इनहिबिशन। पढ़े हो कि नहीं? When this regulatory mechanism becomes breakdown, the cells becomes uncontrolled. होगा? अगर ये रेगुलेटरी मैकेनिज्म, कंट्रोल मैकेनिज्म अगर ब्रेक डाउन हो जाता है तो, लॉस हो जाता है तो, the cells become uncontrolled division, and cells leads to the uncontrolled division causing the cancer cells.
and this cancerous cell leads to tumor, and tumor को scientifically क्या बोलते हैं? Neoplasm. So leads to tumor और neoplasm. तो ये कब होगा? जब ये नॉर्मल सेल का जो कंट्रोल्ड मैकेनिज्म है, रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, वो अगर लॉस हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, then that cell become cancerous. And इसीलिए कैंसरस सेल में अनकंट्रोल्ड डिवीजन होता है. So what are the property of the cancerous cells? Properties of cancerous cells. Number one, loss of contact inhibition. Number two, less adhesive. अरे सेल और सेल के बीच में एडहेसिव होता है बिकॉज ऑफ व्हाट ना, एडरिंग जंक्शन, याद है जिसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन सेल, दैट इज सीमेंटिंग जंक्शन, जो दोनों सेल को बाइंड करके रखता है, एंकरेज का काम करता है. तो हियर इन बिटवीन द कैंसरस सेल और कैंसरस सेल के बीच में वीक एडरिंग जंक्शन होता है. अगर एडहेरिंग जंक्शन वीक हुआ तो सेल्स एडहेसिव ज्यादा होगा कि लेस होगा? तो हाईली डिटैच, ये डिटैच हो जाता है इसीलिए हाईली डिटैचेबल. थर्ड प्रॉपर्टी, हाईली इन्वेसिवनेस. इन्वेसिवनेस का मतलब क्या है? हाँ, penetrate into other tissue and blood vessels. आप सोचिए, अगर ये ब्लड वेसल में पेनेट्रेट कर गया तो ये ब्लड सर्कुलेशन में आ जाएगा. अगर ब्लड सर्कुलेशन में आ गया तो ये बॉडी के अलग अलग रीजन में रीच करेगा, राइट? नहीं, that gives rise to the point number 4, that is what a metastasis, that is spread of cancer to other part through bloodstream. Number 5, anaplasia. Anaplasia means poor cellular differentiation. Poor cellular differentiation मतलब immature है कि matured है? अरे poor है differentiation तो क्या होगा? Immature है. So cancerous cells are immature and undifferentiated. ये है पॉइंट कि कैंसरस सेल immature होते हैं, undifferentiated होते हैं because the anaplasia, that is poor cellular differentiation. And number last, that is angiogenesis. Form new blood vessels. समझे कि नहीं? कैंसरस सेल ट्यूमर बनाएगा तो ट्यूमर जहां पे बनेगा उनको ब्लड जो चाहिए ना, उनको तो न्यूट्रिएंट चाहिए, उनको तो ऑक्सीजन चाहिए, तो वो अपना खुद का ब्लड वेसल बनाएंगे ताकि ब्लड को अपने करीब ला सके. समझे कि नहीं? And that is called as what? Angiogenesis. So these are the characteristic property of the cancerous cells. In the next class we will start the types of cancer, the types of carcinogen, etc.